So we will be continuing from the last class. We want to learn about the Dravya, means the substance, right? So Tattva, do you know how many Dravyas in this universe? Um, Jeev and Ajeev Jeev, and Pudgal, Ajeev. Mhm. Ajeev, and Ajeev. Okay. So Jeev and Ajeev, you can divide it all those the Dravyas into two categories, Jeev and Ajeev, but there are the all other categories as well. But how many of those are? Means, do you know their the names? Um, Dravya, like Dharma, Adharma, Akash, Yes, yes. Those yeah, are the substance, right? right, Yes. right, right. So Jeev, Mm-hmm, Pudgal, mm-hmm, Dharma, Adharma, right. Akash, Yeah, Kaal, correct. right? So Yeah. those are the six. Acha, so can we prove that we have only six of those one somehow? Uh, yeah. Pudgal is Paryay, right? Uh, Pudgal is not a paryay. So let's we can do because however I am little bit offering this the subject and my baseline is a Panchastikai and that is been written by Acharya Kunkun Bhagwant. Okay, and however into this book they have put all those the six substance and they prove it ki why in this universe there are the only six one and how it will be. And then after with the Dravya Sangra, we can go how we can divide it, all those the six substance into the different categories, right? We'll be going through what is the substance, okay, then what is the gun means the attributes, and what is the modifications means the paryay. We can also little bit going to deep into it. And Tattva, this class will be a very important one. Why? Because our entire Jinagam, whenever if you learn about it, what is the Jainism into Jainism, the sixth substance means the sixth Dravya is a very basic things through which one all other things will be starting it out, right? If you're talking about the karmas, if you're talking about soul, if you're talking about gatis, all whatever you are talking about, it is based on the six dravyas. And because there are in a Tatvar Sutra, they have given all this one as a name, and we are using as a name, like a Jeev is a name into the Dravya one. We can uh-huh. for understanding purpose we use as a soul, but it is particularly a name. However, your name is Ankit, right? But whatever the meaning of the Ankit will be, we are Mm-hmm. not mentioning into that one, hey, and we are not calling you by that one. So same way Jeev is a name, Pudgal is also a name, Dharma is a name, Adharma is a name, Akash is a name, and Kal is a name. Just to understanding purpose one, we know what one each one is. So we call Jeev as a soul one, Pudgal as a Pudgal, we can always been saying. But Dharma is a medium of motion, Adharma is a medium of rest, Akash is a space, and Kal is a time substance, right? So that is how. Right. So let's based on this the Panchastikai, we will be seeing why there are only six, not the seven, not the eight, not the 10. Uh, because they have said, hey, that is the base and that is what it is being called. Uh, and we have received that the informations through which one? Through the Jirendra Bhagwan, and they have seen into their omniscience, into their केवल ज्ञान. उसने Right. उसमें केवल ज्ञान में देखा कि there are छह ही है तम छह मगर क्यों Ah, सिर्फ छह ही है? Why? If the other people will come and say, hey, no, we are not believing one of this one, we are not believing another of this one, but then uh-huh. how you can prove there are only six substance, right? So first one, because we have already getting experienced about our soul one. So we have a soul means the Jeev Dravya is a different from the Pudgal one, even though it will Uh-huh. be, we are looking through this, the body. However, the body has a certain kind of those, the power through which one that the body is alive, right? And then that if that the power will be go out from that the body one, then the same body become a dead body,
And Right. so that kind of the energy we have seen, that one up body doesn't require a rest or continuously working one, but there is something up there one, it is always been staying with this the body and make this the body alive, and that things we can also feel their presence. So which one if those one up, so that is myself one, so that's why we're putting up as a soul, and we Mhm. know that this is the soul, and soul and the body is a different one. It's from that they have already proved that one. I am proving it very, very basic way. So if any one of you means couldn't understand, you can tell me, stop me. But this is the very basic, and that is been written into this the Panchastikai. So we Sure. have felt that the presence of energy, and that energy we called as a Jeev into that the body one, because that is a separate energy, that's we know. And then body has their own energy, but it will be because once that the soul energy out of the body, what would happen to the body one? Then in the same body it start losing their temperature. It's in that one cannot even hold their temperature, right? It's become a very stiff, it's become a dead body. And this Mhm. is already been experienced, and through which one nowadays that the science is, whenever they do any kind of those the post-mortem, they will try to find out time of death. Right. So it means that there is some kind of that the energy, and that energy is being called as a Jeev, as a soul into our one. Mhm. Then after the second one is a Pudgal. So what is the Pudgal? Means it is already been studied in a name, um, um, uh, Pudgalan, right? Galan means Mhm. it will be you that spreading it out, or it Decomposed. Yeah. yeah, decomposed, or a simple way means detached, right? So उसको छूट Detached. Right. छूट छूट जाता है, and pud means जुड़ Mm. जाता है, जोड़ना. So Mhm. जो जुड़ता है और छूट जाता है, जुड़ता है छूट जाता है, ऐसी जिसमें Mm. चीजें दिखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुद्गल. So everything whatever we Pudgal. are seeing right now, so what we can see, we can taste, we can feel, everything is a pudgal. Mhm. Mhm. Because pudgal has a touch, taste, smell, those kind of the things each pudgal has. Okay. So how about a light? Light is a pudgal, right? Whether it's a white or black or any kind of those the light or color is a pudgal. How about a sweet taste? I test it out, sweet, salty, that means, and any kind of those one. So that is also a pudgal. All right. So that is the pudgal. We have a maximum. How about sound? Sound is also a pudgal. Okay. So we have our maximum experience is with the pudgal, because pudgal is a murtik. Murtik means जो दिखता है. You can see it through your eyes, right? It's a murtik. So anything you are able to see it, it's a pudgal in the shortest way. Then after, because if in this the world there is also just the one soul and the pudgal is there, then they cannot perform if we cannot give them another support, like it cannot move. So in a science wise, if you see that one, even though that the atom, yes, Tattva, this one is the 12 plus Pathshala, so anyone can join about from the 12 years and over. Okay. अगर तत्व तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुम मुझे पूछना, मैं उस लेवल पे जाके तुम्हें समझा दूंगा. So अगर आपने have you already seen this one in a movies as well? Right, means that the atom has all those, the electron is constantly moving around it. Whenever we are learning about those the science one, so how this the motion is been possible? Okay, we needed some kind of those the medium. Without that the medium, that the motion cannot be possible. Okay, and if you we already seen that
the one thing is been start from here to moving over there as well. So something we already seen in this the universe one, they are constantly moving it. Okay, and that the movement is for that one, it cannot because any kind of those substance cannot just move alone. Then it is some and some kind of that the support. And for that one, whatever that the medium is providing support is a medium of motion. It's we called dharma. Okay, so that is we already experiencing it, right? Something is constantly moving. Right now, it's for an example. If I am saying you hear one and wherever the place you are in the world when you are listening, then the how this the picture and sound is been moving. Okay, for that one, they also needed a medium. So what is the medium here one? So here one, the medium is air. So because they that from my computer, they converted this the transmissions into the wavelength that the router is being catching. Router is converting that one into the some another portions, right? And it's again it's going through this the it's through this either fiber or a tower through the fiber one is going again to wherever you are over there to the tower to your router to again in the air, and then you are about to listen it, right? So here one we are right now not seeing that kind of the process is running behind it, but if we taking it out all those the supportive mechanism, then what would be happen? Does my sounds able to reach to you? No. If we are making an 100% vacuum, even sound cannot travel it, and that has been proved by the science as well, right? So it means that we they needed a certain kind of those the medium, and that medium of the motion is called Dharma Dravya. So hence we can prove that yeah, there is a medium. Without that one, that the movement is not possible into anyone. But if what would be in a situations, just imagine if everything is constantly moving, then what would be happen, right? You will just imagine that the world, if you just start like and if you just start walking and you have to keep walking, you cannot even stop yourself one, then what would be happened? That it would be create a great chaos. So in this world we have also seen that the certain things whenever they move they stops. So for the resting, they also needed support. Without support, you cannot rest. However, for the moment, you need a support. It's like a medium one. So same thing for the rest as well. Okay. And that for the medium of rest, it's called Adharma Dravya. And when it is that kind of that the substance is supposed to be, it's supposed to be exist, and it should have a constant things, means like it's always been presence, it's always been existing for you, that the medium is. And that is also a one major characteristics about the substance or द्रव्य. द्रव्य में अस्थि नाम का गुण होता है. अस्थि यानी कि वो है, राइट? तो उसमें होनापना चाहिए. ये है, आपका वो मीडियम है, और वो हमेशा होना ही चाहिए. अगर वो मीडियम को हटा दिया तो कोई भी चीज, then after it, they once it will be start moving, it's supposed to be moving all the time. It cannot be have a rest. हम लॉजिक से समझ रहे हैं कि हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि क्यों ये सिर्फ छही है, राइट? तो अधर्म मीडियम ऑफ रेस्ट, वो मीडियम है, वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. और ज्यादातर वो फैसिलिटी कौन यूज करता है? हु इज यूजिंग दैट द फैसिलिटी मैक्सिमम? देयर आर द ओनली टू सब्सटेंस दे आर यूजिंग इट, मीन्स there's facilities or two dravyas. One is a Sol or a Jeev Dravya, and another one is a Pudgal Dravya. Because they are usually constantly, we've seen them up, they are constantly moving from the one to the another one end to the another one, and or one place to the another place.
All right. Now we are talking about the space. Without the space, we cannot prove any substance existence. If there is a substance, there is supposed to be exist, right? If there exist means they're supposed to be present in somewhere. And whenever they are present, it means that they are occupying some area. And whenever we are talking about the area one, okay, that then the another substance will come who provide that the facilities. It's called Akash, Akash Dravya, right? Without the space, nothing can be substance or nothing can be exist. So हर एक के existence के लिए उनको space तो चाहिए ही चाहिए. तो ये space कौन provide करता है? तो ये space जो है वो आकाश provide करता है. And why this theory? They put it up in a Panchastikai and they prove it because on that time there was also one another kind of those the belief system was there. In very first positions it was nothing, and then suddenly God created everything from the nothing, and that is not possible, right? If there is nothing, then you cannot create anything. And if you have created something, it means that there should be something, right? So if they have created, it means that there should be an space is always been there, and then you can create a space, then and then you can create an earth. If there was not a space, then how you can create an earth or and this universe or this world or anything? And how you can create a space? To create a space, what kind of the things you need it? You just need a space. And you say the space was not exist before any kind of the creations. There was nothing. So that is not possible. You understand, right? So that's why they proved this all these six substance in a very logical manner, in a very deeply manner, because we do not right now study that the Shastra, so that's why I'm not going into that kind of the depth. But whatever it's necessary, I'm covering it up here one. So that's how we accept existence of the space, right? We also accept, okay, if there is only a space, but that the space is just give you a area, but if you cannot move then, so then you also has to accept existence of medium of motions. You also has to accept medium of rest. You are seeing something, so you also has to accept Pudgal Dravya, right? So it was there. It was not something that is been created. It was there from the beginning. And then you also need to be accept the existence of the soul. That is some energy, but where this energy is come from, where it goes. And for that to answer those questions, there are so many religions. Religion is right now up there, but they will say, okay, so if that the energy, and now science has already been accepted, the energy cannot be created or cannot be destroyed. It's just to transform it. We can transform there from one to the another way. The transformation is possible, but creations and destructions is not possible. So that's how it's proved that soul is ever exists. And now the last and most controversial element, it's called Kaal or a time. Okay. So if everything is before those one, we have proved that, right? All those things were there. But how we prove that it was there in the past as well? So for any kind of those the existence, we need a 2 point. Without the 2 points, we cannot prove anything whether it was exist. So 1 point is a space. Okay, any existence supposed to be present in a or they are occupying any kind of those the space. And second element is a time. Okay, and that thing supposed to be exist in a presence of the time, so in a certain time.
So there are the two things. वो टाइम में भी एग्जिस्ट करना चाहिए और स्पेस में भी एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर उन दोनों में से किसी एक में एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जिस्टेंस कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता लॉजिकल मैनर पे. So for that one, we need a sixth element is a time. Okay. So how is this the time is? Time कैसा है? Right? So time को कालाणु बताया गया. Means that is the anu. Anu means the it's just like a small atom. The smallest thing. It exists. Time is in as a form of atom. And their shapes is like, and you can just consider like a marble one. So if you only see right now new AI pigment one, so you know that they have created one mat, and mat has all those are the marble kind of those are the small rounds. So you can walk on it, and with this the virtual VR set, you will feel that hey, you are going into the some directions. People are using for those the video games. They tie themselves with that and they've on over that mat. They keep walking, and however they're walking, they are playing that the game. They can move one directions and other directions, but they are still steady at to their positions because they have already been caught with this the belt one. But underneath of there is a mat, and over mat you can just keep walking it. You can however which directions you walk, the same way you are also going in your game, virtual reality games, right? And you might see that those are the small marbles kind of the things into the mat one that allowed you to keep running on to it. You can run, you can walk, you can do all those the stuff over there. But even though you are still over there, and those are the small one, and this one is in a series wise, it's been arranged. Same thing happened because we needed smallest portions to measure, okay, any kind of those the modifications, how we measure it, any modifications with time, right? So then up to what extent we want to measure any kind of those the modification, आप किस लेवल तक वो modifications को measure करना चाहोगे. We are saying at an atomic level, right? Or at electron or subatomic level. So जिस लेवल तक आप चाहोगे ना, तो उसी लेवल तक भी टाइम का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. अगर टाइम बड़ा है तो वो मीन्स जितनी टाइम की साइज है उनसे कम आप किसी को मेजर नहीं कर पाओगे, राइट? टाइम बोलेगा कि भाई बस इतना ही है, तो आप उससे दैट वन इज योर limit, and beyond that one you can measure, but under that one you cannot measure it. So that's why the time element is supposed to be the smallest one. लॉजिक से भी प्रूव होता है क्योंकि because we want to measure any kind of those the modifications, we want to measure it, we want to note it down, we want to talk about it at a very minute level. And that one, whenever we are going beyond one, it is just the last undividable or undivisible portions of any matter is a atom. ओके, उनसे दूसरा कोई अनडिविजिबल पोर्शंस नहीं है, तो उस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा. तो टाइम भी उसी लेवल तक एग्जिस्ट है. ओके, सो हाउ बिग इज अ टाइम? तो इसीलिए उसको कालाणु बोलते हैं. कालाणु यानी कि काल का अणु. तो काल यानी कि टाइम, वो इतना छोटा है, पर it is been spread like, and however you will see all those the marbles in a mat one, it's spread like that way, one by another. So it's spread vertical and horizontal, but into the beads kind of the things. ठीक है. Okay. And are we using it? Yes. Your face recognitions, how it will be working it out. That means in a particular pixel ones, they are just measuring, okay, into these pixels, the face supposed to be occupied only that many pixels. And they measure it. This one is you are. Okay, or you are not. Nowadays, even thumbprint or something.
So we are using that kind of, so means this for that kind of even small changes, if they are using this the technology, then definitely for that one there is a certain kind of the things they're supposed to be facilitated it, and time is. So time always been run into two directions, either upward or downward, and it's spread out horizontal. Okay, so there are only these directions. So that's why we have a future, we have a past, and we have a present. There is no fourth dimensions in a time. Because it's arranged in this universe in such a way. That's why. Okay. And that's how we prove that yes, there is a time is also element and it's also a constant. तत्व में थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया पर are you able to understand तत्व? If you can turn on your camera, I can see your face and I'll try to. So are you able to understand, right, Tattva? Yeah, almost. Almost. Very good. Okay, so what we are doing, we are right now prove that okay, these are the six elements or six substances being existed forever, and there is no seventh element. Now you can tell me which the seventh element you need it. आप बताओ आपको कौन सा सातवां तत्व चाहिए कि जो इन छह के अलावा एक और डायमेंशन हो. ठीक है, आपको स्पेस चाहिए, हमने स्पेस दिया. आपको मूवमेंट के लिए मीडियम चाहिए, हमने मूवमेंट के लिए मीडियम दिया. आपको रेस्ट के लिए मीडियम चाहिए, हमने रेस्ट के लिए मीडियम किया. आप वो बोल रहे थे कि मुझे एग्जिस्टेंस मेजर करने के लिए भी एक एलिमेंट चाहिए, हमने आपको टाइम दिया. राइट. ठीक है. आप ये सोच रहे हो, इसका मतलब है आप एग्जिस्ट कर रहे हो. तो एक हमने आपको भी काउंट किया, और एक आप सब कुछ दिख रहे हो और ये सब कुछ कर रहे हो, तो हमने एक उसको भी काउंट किया. तो यही तो छह है, उनके अलावा हम सातवां किसको ऐड कर सकते हैं? अंकित जी, लॉजिक से समझ में आ रहा है, राइट? वैसे जो होता है ना उनको प्रूव नहीं करना होता, पर कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने ये प्रूव किया, लॉजिकली थियरम लिखा पूरा, और वही थियरम पंचास्तिकाई नाम का शास्त्र है. हम्म. क्योंकि जो है उसको तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो है? प्रियंका जी है तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? बाकी जो सारी चीजें है ना उसकी इंडिकेशंस हो सकती है, कि जैसे प्रियंका जी का पासपोर्ट, ओके, प्रियंका जी का सोशल सिक्योरिटी नंबर, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, वो इंडिकेटर हो सकते हैं कि भाई हाँ ये एक जो है उसको हम बता रहे हैं कि ये है. बट उसका मेजर प्रूफ क्या है? प्रियंका जी खुद, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस ही मेजर प्रूफ है. राइट. बाकी की चीजें इंडिकेटर हो सकती है. सही ना? दिस इज more logical explanation I'm trying to put it, but we need to understand कि why it is this one. ठीक है. So with this one, now we have divided a dravya into the various category. We are just right now understanding about those the dravyas. Okay, and that one is based on with the dravya sangra. So how we can divide it dravya into different categories, right? So first one we can divide the dravya into Jeev, Ajeev. So one is living being and another one is non-living being. Right? फिर हम उसको कैसे, so what will be a living beings and non-living beings? So only soul is a living being and all other fives are non-living being.
ठीक है, कि जो जिंदा है वो तो सिर्फ कौन है, सोल ही तो है, और बाकी सारे अजीव है। जीव अजीव, अंकित जी आपका पहला डिवीजन आ गया। हम्म, ठीक है, तो ये डिवीजन किस अपेक्षा से है? सो ये डिवीजन द्रव्य की अपेक्षा, हम जो जीवनपना चेतनत्व है ना, उसकी अपेक्षा से है, कि चेतन तत्व में हूँ, जानने वाला, देखने वाला। ठीक है। सेकंड वन इज मूर्त अमूर्त। मूर्तिक मीन्स कि जिसको हम देख सकते हैं। तो हम किसको देख सकते हैं? सिर्फ पुद्गल को, क्योंकि मूर्तपना सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाता है। बाकी पांच अमूर्तिक है, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते। आप आकाश को देख नहीं सकते, आप धर्म को देख नहीं सकते, अधर्म को देख नहीं सकते, काल को देख नहीं सकते, जीव को देख नहीं सकते। ओके, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम जीव को देख नहीं सकते, हम्म, तो फिर हम जब स्वानुभव करेंगे तो अपने आप को कैसे देखेंगे? हम्म, तत्व, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस द क्वेश्चन? No. नो? ओके, so do you know what is the murtik, right? Murtik means whatever you can able to see. So what you can able to see? You can able to see any kind of those the color, right? Black, white, red, green, blue, everything. So that is a murtik. Then sound is also murtik. Touch, any kind of those that touch things is also murtik, because murtik has a particular shape. All right, and that's how you are able to see it. So then which one doesn't have those kind of the things? So rest of the five one, they don't have it, like a soul. Okay, soul is amortic, you cannot see it. हम्म, तो जो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में घोस्ट वगैरह देखते हैं वो क्या है? वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? हम्म, ठीक है, हम उसको, जो कोई भी अमूर्तिक चीज है ना, उनको हम इस दुनिया में बने हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसको कैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, दैट इज मेड ऑफ मूर्तिक, राइट? सो मूर्तिक से अमूर्तिक पकड़ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो अमूर्तिक है, वो अमूर्तिक को और मूर्तिक को दोनों को पकड़ सकता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कि इफ यू गेट अ पावर ऑफ डिसअपियरिंग, राइट, कि तुम किसी को भी नहीं दिखोगे, यू बिकम लाइक अदृश्य हो जाओगे। ठीक है, तो तुम दूसरे को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? हाँ, तुम सिर्फ अदृश्य हुए हो, यानी कि लोग तुम्हें नहीं देख सकते। You have a special kind of that the power, like Mr. India one. You have that the gadget that make you invisible. Hmm? So what you do? Without you become an invisible, but you can see whoever is the visible one. Correct? But what are the visible things? They cannot able to see you because you are invisible. So same way कि अमूर्तिक जो है वो तो मूर्ति को देख सकती है, लेकिन मूर्तिक है वो अमूर्तिक को नहीं देख सकता। ठीक है। हम्म, हम्म। तो हाउ अबाउट द घोस्ट? हम्म, तत्व मूर्तिक है कि अमूर्तिक है घोस्ट?
कम ऑन, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। घोस्ट क्या है? तुम्हें दिखता है घोस्ट? अगर दिखता है तो मूर्तिक है। हाँ, अमूर्तिक है। घोस्ट नहीं, मूर्तिक है, दिखता है। अगर दिखता ही नहीं तो तुम जाते वहां पे कैसे? क्योंकि ओके, सो घोस्ट जो है ना वो मूर्ति की हम उसको बोलेंगे, राइट? दिखता है ना, चाहे डरावना दिखे या कैसे भी दिखे। तुमने देखा है, राइट? ओके, तो दिखता है तो मूर्तिक है। सिंपल एक्सप्लेनेशंस। अगर वो तुम्हें दिखेगा तो मूर्तिक है, नहीं दिखेगा तो अमूर्तिक है। ओके, एंड प्रियंका जी, अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने एक ही उसी में ही दे दिया कि हम लोग, ठीक है, आत्मा अमूर्तिक है, तो क्या वो हमें दिखाई देती है? तो केवली भगवंतों ने कैसे देखा कि अनंत तो अनंत जीव है? हम उनको साइड में पार्क कर देते हैं। अभी बाकी के आगे के जो सारे है ना, वो उनको कंप्लीट करके फिर इस पे आते हैं। ठीक है, बिकॉज आत्मा के पास एक स्पेशल पावर है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। जब भी कुछ भी ऐसी बात आए ना तो हमें क्वेश्चन होना ही चाहिए। हम वी आर रीडिंग इट आउट द्रव्यानुयोग। सो इन द्रव्यानुयोग you are allowed to ask any kind of those the questions. Okay, you cannot uh, allowed to ask questions in a pratmanuyog, in a karnanuyog or in a charnanuyog. वहां पे अल्टीमेटल आया जाएगा कि बस ये है, ऐसे ही करना है, खत्म। बट इन द्रव्यानुयोग, we are, that's why they are, giving that logical explanations. That's why they will try to prove it. Hey, you can, with you prove it, you experience it, and that's how it's been done in Dravya Anuyog. Only one Anuyog allow you to ask the questions to the certain limit. ठीक है, so let's we can go for this the next division, and the next division is Sarvagat and Asarvagat. It means that कि their area wise we are considering, right? So सभी जगह पे है और सभी जगह पे नहीं है। सर्वगत सभी जगह पे है। So we, with these divisions only a space is everywhere, right? And in asarvagat all other five will come, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ लोकाकाश तक ही है। अलोकाकाश में हम नहीं है, तो हमारा यूनिवर्स, यू हैव सीन दैट द यूनिवर्स, वी डू नॉट हैव इन माय लोगो दैट यूनिवर्स, बट आपको वो यूनिवर्स पता है, राइट? ऐसा ऐसा है अपना। सो व्हाट इज दैट? दैट इज आवर बाउंड्री। तो एक उतने लिमिट तक, हम सिर्फ उतने लिमिट तक ही है, इसका मतलब हम सभी जगह पे नहीं है। तो हम बाकी के जो पांच द्रव्य है ना, वो उस यूनिवर्स में आ जाएंगे। और ओनली एक आकाश द्रव्य है, ओनली द स्पेस, because the space is everywhere. So with these divisions, we can put it only a space into Sarvagat one. Okay, ठीक है. And then after, so now with the space and volume wise, कि कौन कितना बड़ा है, तो उसको बोलते हैं अस्थि काय। काय यानी कि बॉडी, अस्थि यानी कि होना। तो उसकी बॉडी कैसी है? ओके, ठीक है। तो बॉडी बनने के लिए हमें क्या चाहिए? मिनिमम दो एटम चाहिए, मिनिमम दो, और दो से ज्यादा, राइट? तभी तो हम, तभी से तो कुछ बनना शुरू होगा। एक अकेला होगा तो वो क्या बनेगा, बताओ? अंकित जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट द लॉजिक, राइट?
हमें अगर जोड़ी है तो जोड़ी के लिए मिनिमम दो चाहिए। लोग हम जब बोलेंगे तो लोग के लिए एक अकेला होगा तो उसको लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मिनिमम एक से ज्यादा चाहिए। राइट, मिनिमम दो चाहिए और दो से ज्यादा। तो उसको बोलते हैं अस्थिकाय। काय यानी कि बॉडी, अस्थि यानी कि होना। तो उसकी बॉडी कैसी है। तो अगर जब बॉडी की बात आई तो उसके अंदर पांचों समाविष्ट हो गए। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म एंड आकाश। बट काल समाविष्ट नहीं होता, क्योंकि काल सिंगल प्रदेशी है, एक प्रदेशी है, अणु के रूप में है। हमने अभी काल को देखा कि वो कैसे है। वो सारे पर्टिकुलर परमाणु इसी हिसाब से चेन में पूरे बने हुए हैं। वो सिंगल सिंगल है, इंडिविजुअल है। ठीक है, वो सिंगल है, इंडिविजुअल है, और वो सबसे कम जगह ऑक्यूपाइड करते हैं स्पेस में। तो उसको बोलते हैं, स्पेस की सबसे कम जगह को हम क्या बोलेंगे? पूर्वी जी, आपको पता है उसका नाम? समय। स्पेस, स्पेस की प्रदेश। 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 हाँ, वेरी गुड। प्रदेश। हाँ, तो उनका एरिया सिर्फ एक प्रदेशी है। एक कालाणु का एरिया है एक प्रदेशी। ओनली वन प्रदेश इट्स ऑक्यूपाइड। ठीक है। तो एक प्रदेश में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसे। ऑलराइट, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि बाकी जीव बहुप्रदेशी है, पुद्गल बहुप्रदेशी है, आकाश बहुप्रदेशी है। हम उसके ज्यादा प्रदेश तो देख ही सकते हैं, एक से ज्यादा आकाश के। राइट। फिर हम जो ये हमने मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट हमने देखा, तो वो तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो इतने बड़े एरिया में व्याप्त होने के लिए एक प्रदेशी होना चाहिए कि बहुप्रदेशी? एक से बहु यानी कि ज्यादा, एक से ज्यादा। तो वो बहुप्रदेशी है। ठीक है। हम्म। तो इससे हम, वैसे अगर हम द्रव्य के डिवीजन करें तो उस डिवीजन से, प्रदेश के डिवीजन से पांच, इसीलिए तो पंचास्तिकाय बुक का नाम लिखा कि भाई अस्तिकाय पांच ही है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पांच ही अस्थि है। तो उस डिवीजन से, यानी कि एरिया के डिवीजन से हम देखें तो उसमें दो डिवीजन होते हैं। एक तो मल्टी स्पेस ऑक्यूपाइड वाले सारे, तो उसमें पांच आ गए, और एक ओनली वन स्पेस पॉइंट को ऑक्यूपाइड करने वाले, तो उसके अंदर काल आया। ठीक है। और एक डिवीजन है कि हाउ मेनी, नंबर के हिसाब से कितने हैं। हम्म, तो वन वन जो सिंगुलर है ना, वो आकाश है, धर्म है, अधर्म है और काल है। यानी कि चार वाले हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअली सिंगल 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 ही है, वन 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 ही है। आकाश एक है। ओके। काल एक है, धर्म एक है, अधर्म एक है। तो ये चार है, तो वो सिर्फ एक एक है। ओके। और काल को हम दूसरे में भी डाल देंगे, क्योंकि संख्या की अपेक्षा हम अभी मान रहे हैं। तो काल को हमने यहाँ पे डाल सकते हैं, पर इंडिविजुअल के हिसाब से भी हमने डाला, पर बाकी संख्या की अपेक्षा से हम जाएंगे तो काल को हम दूसरे में, कि भाई एक और अनेक। तो अनेक के अंदर कौन कौन आएगा? पुद्गल आएगा, पूरा जीव आएगा, और काल आएंगे, क्योंकि कालाणु काफी मात्रा में है, नंबर में, इंडिविजुअल होते हुए भी। तो कितने हैं? तो कि भाई कालाणु जो है ना, वो असंख्यात है, मगर फिर भी उस असंख्यात को संख्यात के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट है। कितनी लिमिट है? लोकाकाश जितनी। राइट। 314, 314 क्यूब राजू, घन राजू। उतनी लिमिट, उतनी लिमिट, उतने एरिया के अंदर जितने कालाणु आ सकते हैं उतने ही है। तो एक हिसाब से हम उसको संख्या के हिसाब से काउंट कर सकते हैं,
मगर वो संख्या 21 अंक प्रमाण से ज्यादा होने से उसको असंख्यात में भी काउंट होगा, अनंत में नहीं होगा। फिर भी वो नंबर है, एक लिमिटेड नंबर है। राइट, ठीक है। फिर पुद्गल, तो पुद्गल में 3 है। ओके, संख्यात, असंख्यात, अनंत। राइट, और हम उसको अनंत अनंत भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जीव की अपेक्षा से कि भाई जीव कितने हैं, तो कि भाई जीव अनंत है। तो जीव की अपेक्षा से हर एक जीव को मिनिमम कितने कर्म लगते हैं पूर्वी जी? 9 कर्म, 8। 8। ज्ञानावरण, दर्शनावरण। ओके। राइट, 8 है ना? हम्म। तो एक जीव के लिए तो मिनिमम 8 है, मिनिमम। और उसमें भी संख्या की सबसे काफी। तो जितनी जीव की संख्या है उनसे कई गुना ज्यादा किसकी संख्या होनी चाहिए? उद्गल। उद्गल की। बराबर। ठीक है। Tattva, if you are not making a note, that means this sessions, it will be not repeating it. But this is very base one. Because on this one, every time, any and whenever we are talking about a certain kind of those, the prospective, या तो किसी भी हम एंगल से बात करेंगे, तो ये सारे एंगल हम इसी में किसी ना किसी एंगल से ये सारे यूज करेंगे। इसलिए अभी हम सिर्फ द्रव्य को समझा रहे हैं कि भाई द्रव्य को हम इतनी इतने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अंकित जी, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डेफिनेटली पूछो। सॉरी, ये सेशन थोड़ा सा हाईली टेक्निकल हो गया है, पर नहीं, अब उसी के लिए ज्वाइन किया था। समझने के लिए। हाँ, तो समझ में आ रहा है, राइट? इनसे हमारे बिल्कुल। धर्म की डेप्थ भी समझ में आ रही है कि कितना लॉजिकली वो अपना जो धर्म है ना, उसमें दिया गया है डिविजन्स वगैरह, किन किन हिसाब से उसने सोचा था, कैसे कैसे ये किया था। हम्म। जय जिनेन्द्र बेटे, you should also listen about with your dad, okay? Because this is also your class as well. Mhm. So, and now, okay. So now let's will be go back to the questions we have parked, right? In our parking lot. What was the question? कि आत्मा और अमूर्तिक है, तो वो केवल ज्ञान में दिखेगी कैसे? ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम उसको पार्किंग लॉट में करते हैं, पर उसके लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। And Tato, if you can keep your camera on, it would be great, because I tried to in that look at your face and see whether at what and how much you are you able to grasp. Mhm. But it's better if you're making a note. This will be literally helpful to you, because whenever in a future one we are talking about a certain kind of those the perspective, right? So on that time, either of the one kind of this divisions will be helping it out. If you know how this has been divided, how this the dravya has been divided into in certain things on up there, then and then you understand, okay, they are talking about a space perspective. They are talking about times perspective. They are talking about numbers perspective, right? So those kind of, they are talking about whether we can see it or we cannot see it, that perspective. With the perspective, they are talking about it right now, how this the talk is going on. And that's why these all the divisions are one, and I'm explaining it to you. So first one again, that the questions I put up in a parking lot will be coming out to it. Okay, so for to understand that one,
we need to again understand there are the two another things. Okay, so what is the द्रव्य? What is a substance? Substance क्या है? द्रव्य क्या है? तो by definition, right, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं. जो गुण है ना, एट्रीब्यूट्स हैं सारे, ओके, उसके कलेक्शंस को, उसके समूह को क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे. यानी कि एक सब्सटेंस के अंदर इनफाइनाइट अनंत गुण होते हैं. ठीक है. और हर एक गुण की, हर एक गुण में मॉडिफिकेशंस होता है. तो हर एक गुण की पर्याय होती है. Any modifications you are seeing right now, you are moving from one to another one spot to another one, so that is kind of the changes is happening, right? So how this the changes has been happening, it's called a पर्याय, modification, and each substance has those one. So हर एक गुण की होती है पर्याय, और द्रव्य की भी पर्याय होती है. जो कलेक्टिवली पर्याय हम बोलेंगे उनको, वो एक खुद द्रव्य की होती है और एक गुण की होती है. सारा हर एक गुण की पर्याय अलग अलग. ठीक है. Any kind of that the modifications into that attribute, so we can measure it through that's the modification. जैसे before this the class तत्व you know about, or you might have heard about only the name of 6 substance or 6 dravyas, right? But now you know in depth about what kind of the division has been happening and how it will be. So whether it will be increase in your knowledge or it's not increasing your knowledge. कुछ तो increase हुआ ना तुम्हारा knowledge. So before that the point, your knowledge was this one, and then now it is up to some certain level. So some modifications हुआ, तो modifications को हम क्या बोलेंगे? पर्याय बोलेंगे. उस changes को क्या बोलेंगे? पर्याय बोलेंगे. पर्याय is a terminal technical term to call that modification. Okay, तो उसको जब भी modifications की बात आएगी तो वो पर्याय. तो अब पर्याय किसकी बात होगी? सिर्फ दो ही की पर्याय होती है. किस किस की? एक तो गुण की होती है और एक द्रव्य की होती है. तो द्रव्य की होती है वो कलेक्टिवली होती है, पूरे के पूरे द्रव्य की. और गुण की होती है वो इंडिविजुअल होती है, क्योंकि दैट इज ओनली बीन अप्लाइड टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ओनली. पर्टिकुलर गुण को ही सिर्फ एप्लीकेशंस में होता है. ठीक है. जैसे मैं आपके जीव की पर्याय की बात करूं, तो अभी आपके जीव का साइज कितना है? जितनी आपकी बॉडी है, राइट? तो नेक्स्ट ईयर आप थोड़े से और लंबे हो जाओगे, तो आपकी जीव की साइज कितनी हो जाएगी? थोड़ी सी और बड़ी, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, राइट? तो वो चेंज हुआ ना. तो वो उसके किस गुण में हुआ? कि भाई उसके गुण में नहीं हुआ, वो तो चेंज किस में हुआ? पूरे के पूरे जीव में हुआ. तो वो मॉडिफिकेशंस किसको अप्लाइड होगा? जीव को. पर हमने अभी पर्टिकुलरली आपको नॉलेज के बारे में बताया, तो नॉलेज में जो चेंज हुआ, बिलीफ में जो चेंज हुआ, ओके, सो दोस आर द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स. तो उसके अंदर जो कोई भी चेंजेस होते हैं वो किसके होते हैं? वो गुण के होते हैं. गुण की पर्याय है. गुण तो होते ही है, पर गुण की पर्याय. ठीक है. हम्म. अच्छा, अब गुण किसको कहते हैं? राइट. तो गुण हम किसे कहेंगे? उसकी डेफिनेशन क्या है? कि जो पूरे द्रव्य में और उनकी सभी अवस्थाओं में पाए जाए. जो संपूर्ण द्रव्य में, संपूर्ण यानी कि पूरे के पूरे द्रव्य में, और उसकी सभी अवस्थाओं में, यानी कि उनके हर एक किसी भी प्रकार का उसका मॉडिफिकेशन क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर वो पाए जाए, उसके अंदर वो रहे, उसको क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे. ओके. मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने सोना देखा है, गोल्ड. तो गोल्ड कैसा होता है?
उसका कलर कैसा होता है, चलो हम सिर्फ कलर से ही, क्योंकि हम अभी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में बात करेंगे, हम एक किसी को एक गुण को समझ रहे हैं, राइट? तो उसका कलर कैसा होता है गोल्ड का? सिंपल क्वेश्चन है, कम ऑन। येलो। येलो, राइट, ठीक है, चलो हमने येलो आपका कलर ले लिया। तो वो जो येलो कलर है, वो अगर आपने एक रिंग बनाई, तो रिंग में येलो कहाँ पे आएगा? पूरी रिंग में आएगी ना। हाँ, पूरी रिंग में आएगा, राइट तत्व? हम्म। राइट, हम समझ रहे हैं कि वो पूरी की पूरी रिंग में आएंगे। तो उसकी, अब हमने रिंग को अ, पट्टी में डाल के गला के, ठीक है, फिर उसका चेन बना दिया। अब येलो कहाँ पे रहेगा? पूरे चेन में, राइट? सही है तत्व, कि वो तो सिर्फ रिंग जितने पार्ट में था, अब बाकी का चेन जो है वो दूसरी कलर का हो जाएगा, बस उतने का ही उतना येलो रहेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं ना। हाँ, कि भाई येलो कलर तो सिर्फ रिंग में था, अब तो रिंग तो चली गई तो येलो कलर भी चला गया, अब तो पूरी की पूरी चेन जो है कोई और कलर की हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो उसमें सर्वव्यापी होता है कि पूरे के पूरे द्रव्य में वो व्याप्त होता है, वो स्प्रेड होता है, और उसके किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस में भी वो रहता है, राइट? चाहे रिंग बनाओ, चाहे उसका सिक्का बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, वो रहेगा, आप उसको निकाल नहीं सकते। हम्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे, ठीक है? अब हम गुण में डिवीजन करेंगे। हमने कितने सब्सटेंस को हमने सीखा? कितने हैं? हाउ मेनी सब्सटेंस, हाउ मेनी द्रव्यस आर देयर? 6, राइट, ठीक है। अब हम एट्रीब्यूट्स जो गुण है ना, उनको डिवाइड करेंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे? इन छयों में, ठीक है? तो कुछ तो ऐसे है कि जो इन सभी के सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, छयों के छयों में, that will be available on each and every substance। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल वन, सामान्य है, राइट? जनरल एट्रीब्यूट कि सभी में पाया जाता है। ऑल राइट, ठीक है। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल कि you know that you if you are in a science one, you will learn about some gases, right? आप कुछ you learn. So in a element one, what is the which elements are in a gas form? Oxygen, nitrogen, right? Hydrogen, correct? So what are the common into that one up to those element? They are in a gas form, and that is particularly very common, correct? तभी तो तुम बोलोगे कि भाई हाँ, ये जो एलिमेंट है ना वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। सम एलिमेंट्स विल फाइंड इट आउट। तुम्हारे पास पीरियोडिकल टेबल है, यू ऑलरेडी नो अबाउट द पीरियोडिकल टेबल, करेक्ट? ओके, तो वो एक पीरियोडिकल टेबल है एलिमेंट का। उसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, थोरियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑल दोज आर okay. And I don't know whether in which standard you are, but if you have didn't yet encountered those one, but pretty soon you will be in a science one. They will say, hey, okay, now you do the math. There are the two particles of the hydrogen and one is oxygen, and then what it calls, okay, so it's called H2O, right? Whenever they combine it and you do the certain kind of the calculations, so one element will be how much is the compatibility with another element, how many atoms it will be accepting from that another one, and how this the divisions will be happen.
So for that one, there's the entire things is been written. It's called chemistry. And that is the base of the chemistry, right? Particularly it's mathematics, but you will learn about it and then you become a master. So, yeah, if you haven't yet learned this one, but pretty soon you will be going to be. So no worries, but this one is, so same thing. So there are certain common attributes is been available to all substance. सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, कुछ कॉमन वाला है. एंड देयर आर सर्टेन जो सभी में नहीं पाए जाते, या तो वो इंडिविजुअल में पाए जाते हैं और या तो वो कुछ कुछ में ही पाए जाते हैं. बट दोज आर द नॉन कॉमन वन. ओके, स्पेसिफिक वन. ठीक है, जैसे टच, टेस्ट, स्मेल, वो किस में पाया जाता है? तो कि वो सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है, क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है. जो मूर्तिक है आप उसको टच कर सकते हो. ठीक है. हम्म. फिर ज्ञान, चेतना, वो किस में पाया जाता है? वो सिर्फ जीव में पाया जाता है. ओके, सो हर एक में कुछ ना कुछ वेरी पर्टिकुलर है कि वो किसी दूसरे में नहीं पाया जाता. नॉट अवेलेबल इन अनदर वन, अनकॉमन वन, और वेरी स्पेसिफिक वन, and a very special one. It's called a special attributes. And so for a broader one into this, the sixth one, we have already been time, but let me just give you a name about all those one. So astitva, vastutva, dravyatva, pramayatva, agrulagutva, और एक छठा है, एक मिनट, उसी का नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, पर हाँ, और प्रदेशत्व. ओके, सो दोस आर द सिक्स वन. और वो क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. वंस वी लर्न, देन थ्रू दैट वन अगेन विल बी गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चंस व्हाट एवर इट इज इन अ पार्किंग लॉट. ठीक है, उसके समझने के बाद हम वापस अपने वाले क्वेश्चन पे आएंगे और समझेंगे कि भाई नाउ व्हाट थिंग विल बी एप्लीकेबल टू दैट क्वेश्चन. But make sure you note down that question, okay? चलिए, so hopefully तत्व की आपको क्लास समझ में आई होगी. थोड़ी सी टेक्निकल थी, पर आगे आगे जाओगे तो इतना नहीं होगा, इजी है. ठीक है, अभी हम उसको जैसे समझेंगे ना, तो डिवीजन काफी इजी हो जाएगा. हम आपको बताएंगे कि ओके अब यहाँ पे किस हिसाब से बात हो रही है, यहाँ पे किस हिसाब से बात हो रही है. तब आप इजीली समझ जाओगे. जैसे हम 6 ढाला पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत. ठीक है, तो उसमें हम कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि भाई उसमें नंबर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं. हम्म. ठीक है ना, तुम समझ रहे हो? तो तुम देन आफ्टर यू आर, बिकॉज इफ यू नो ऑल दोस द डिविजन्स वंस अप देयर, नाउ यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन से द्रव्य में किस हिसाब से ये बात हो रही है. एंड इट विल बी प्रिटी इजी, and then after you will enjoying it. Okay, so now this the floor is open. कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछो, इसमें से जो कोई भी बात समझ में नहीं आई हो ना. ओके, मैं आपको एग्जाम्स में इसमें से कुछ भी नहीं पूछूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट make sure you make your own note, because if you are not making your note, then in the future one everything becomes such a confusing way, and then after they are not going to explain, because this is very basic. This is very basic and we are covered in a class 0.
Okay. And whenever we are talking about the general level one, we presume that you already passed class 0, class 1, class 2, class 3, and now you are into this level one. So on that time, they are not going back to this one and try to explain you, hey, according to this one, this is something. So ये पूरा basic है, like an alphabet. You learn about A, B, C, D, right? So whenever you are right now in your school one, teacher say some spelling and they want you to write it down those spelling. So they are not explaining it's A, B, X, Y, Z. No, they are not explaining it. They presume that you already know about it. So जिनवाणी में भी उसके बाद यही presumptions होगी कि आपको तो बेसिक आता है. चलिए तो विथ मंगलाचरण वी कैन कंक्लूड. अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो, अंकित जी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछो, उसके बाद हम क्लास खत्म करें. नहीं, मेरे ख्याल से क्लियर है। क्लियर है? जो आपने बताया बहुत अच्छे से बताया। हम्म. ठीक है, चलिए. तो फिर भी आप नेक्स्ट में हम थोड़ा सा वेरी स्पीड वे पे रिवीजन करेंगे कि मैंने कौन ठीक कौन है, से रिवीजन बताया था, पर इन डेप्थ में नहीं, सिर्फ नाम से, और ताकि आपको हो जाएगा. राइट? ठीक है, चलिए. ठीक है। सो निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार. सभी को जय जिनेन्द्र. जय जयेंद्र। जय 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 जिनेन्द्र. जिनेन्द्र। So hope you enjoy this class, right? आपने enjoy किया अंकित जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आप प्रियंका एक्चुअली आपकी क्लास ज्वाइन करती है, बट पीछे से मैं सुनता रहता हूँ हमेशा। नहीं नहीं, अच्छा है भाई. ये अब हमको करना चाहिए. हम्म। राइट? अगर आप